Yes. So in the last lecture, we have seen like how to convert this relationship from lookup to the master and from master to the lookup relationship. And also we understand what are the scenarios. I mean, where should we actually convert a lookup into the master, So Rahul's mic was on, I have off. Anyways, so apart from this, one important thing that we learn is that there are three standard relationships, between the account, contact, cases, and the opportunities. So between these three relationships, first of all, it's a kind of lookup relationship between account, contact, account, cases, account, opportunity. The kind of relationship is lookup. But then, additional to lookup relationship, the Salesforce has provided some additional sort of features. What are those features that what we have learned? One important thing what we learn is that between account and opportunity, this is the only relationship. This is the only lookup relationship where you can create a roll-up summary field. And after this, I told you everything. How should you describe the difference between the master detail and the lookup and everything. So now let's start with the roll-up summary. What is a roll-up summary, and what is the use cases of that? So first of all, roll-up summary is a kind of system-generated read-only field. It's a read-only. Now, what does a read-only fields mean? You cannot make any sort of editing, any sort of changes in the output in the value of a roll-up summary. So roll-up summary is a read-only field. First of all, it's a read-only field, and we cannot make the changes in the roll-up summary, in the value of the roll-up summary. So roll-up summary is first of all a read-only field, and you cannot make any changes. Why I'm repeating all this? Because they ask you this question. So they ask you, can I change the value of roll-up summary? The answer is no. No, we cannot do that. Why? Because roll-up summary is a kind of read-only field, and it's a system-generated field. The value of the roll-up summary, whatever the value is being generated by the roll-up summary, is being calculated with the use of 4 different aggregate functions. Roll-up summary make a use of 4 different aggregate functions. These are the 4 functions: count, minimum, maximum, and the sum. We are going to solve the use cases, and I'll also going to give you some assignments for this. So you will eventually understand where should we go for the count, where should we go for the minimum and the maximum and the sum. By the way, let me just introduce if you use the count function, it is going to get the value of the count, and in return to this, it will going to give you one value of the count, like how many students are there whose age is actually between 10 to 15. So it's going to calculate the value of that. Then minimum and the maximum, these are also the aggregate functions, and the sum is also one function. So roll-up summary will take the use of these 4 functions only. Okay, what are the functions that are used inside the roll-up summary? There are only 4 functions. There are only 4 functions: count, minimum, maximum, and the sum. Now, with the use of these 4 functions, roll-up summary will going to calculate a value, and that value is displayed on the roll-up summary field. Now, this is something which is a read-only field, and we cannot change this value. We cannot change this value. We cannot edit this value. Now, roll-up summary, there are few parameters. Once you are going to learn the roll-up summary, there are few considerations. There are few parameters. When we going to apply when we want to create a roll-up summary, so roll-up summary will actually take this value from the child object. Let me tell you this. It is going to take this value from the child. Although roll-up summary is created on the parent object. Out of these two objects, roll-up summary is always created on the parent object. First of all, please write down all this. That has been written, but create your own notes. The roll-up summary is always created on the parent object, but it will take the value from the child. It will take the value from the child object. Roll-up summary is created always on the parent. It will going to take the values from the child object, and based on the values, it's going to perform. Based on the function, what you want to do. If you have applied this count function, it is going to count the value. If you have applied this minimum and the maximum function, so it's going to according to the function whatever you have applied. Based on that, it's going to take some calculation, and in return to you, it's going to return the values again to the parent object. So whenever we create this roll-up summary, there are a few considerations. The first thing is that between the two objects, the kind of relationship must only be the master detail. Now, if this means if the values, if the two objects, they are actually related to each other in the lookup relationship.
If the two objects are related in the lookup relationship, we simply cannot create the roll-up summary, So roll-up summary is always created when the relationship between the two objects is what? It's master detail relationship. This is the first thing, The second is what? Roll-up summary is always created on the parent. Roll-up summary is always created on the parent, and it's going to calculate the value. It's going to get the value from the child. It is not like that. Roll-up summary cannot be created on the child. Roll-up summary is always created on the parent object. If you want to create a roll-up summary, you must go to the parent. You must go to the parent, and inside the parent object, you can create the roll-up summary. ठीक है? Roll-up summary क्या है? Roll-up summary एक read only field है. Roll-up summary क्या है? Roll-up summary एक read only field है. And this read only field will get the value from either of these four function. आपने जो कोई भी function use किया है, according to that function it is going to return the value. Roll up summary हम जब भी create करते हैं तो कुछ बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है. What are those consideration? The first consideration is that कि भाई relationship का जो type है ये हमेशा और हमेशा मास्टर डिटेल ही होना चाहिए. अगर आप लुकअप रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो भाई आप रोल अप समरी फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते. दूसरी बात, रोल अप समरी ये हमेशा क्रिएट होती है पेरेंट ऑब्जेक्ट पे. रोल अप समरी इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स गोइंग टू गिव द वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड, और ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट से वैल्यू को कैप्चर करता है. ठीक है. तीसरी बात और आखिरी जो है वो है गवर्नर लिमिट्स के रिलेटेड, कि भाई एक ऑब्जेक्ट पे ना ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट यू कैन एट मैक्स क्रिएटेड 25 रोल अप समरी, नॉट मोर देन दैट. एक ऑब्जेक्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा 25 रोल अप समरी फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. दीज आर द फ्यू गवर्नर लिमिट्स. सो दीज आर द फ्यू कंसीडरेशंस व्हेनेवर वी डिस्कस द रोल अप समरी. तो कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जैसे कि रोल अप समरी एक तो रीड ओनली फील्ड है. रोल अप समरी में 4 अलग अलग तरह के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, और इन फंक्शन की मदद से ये वैल्यूज को कैलकुलेट करता है. ये फंक्शन कौन कौन से हैं? ये फंक्शन है काउंट, ये फंक्शन है मिनिमम, ये है मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ सम. दूसरी बात, रोल अप समरी जब भी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि जो रिलेशनशिप है दैट मस्ट बी ओनली मास्टर डिटेल. अगर आप लुकअप रिलेशनशिप है तो आप रोल अप समरी फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं. उसके बाद ये है कि रोल अप समरी एक ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम 25 रोल अप समरी कैन बी क्रिएटेड, एंड रोल अप समरी इट इज आल्सो ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द पेरेंट ऑब्जेक्ट. तो दीज आर द फ्यू कंसीडरेशन, 4 या 5 ही पॉइंट है. एज इट इज याद करिए और एज इट इज बोलिए इसको. ठीक है, चलिए. सो पहला यूज केस कॉन्फ़िगर करते हैं कि कॉन्फ़िगर करना है एक रोल अप समरी ऑन द पोजीशन ऑब्जेक्ट. ठीक है, टू रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ द कैंडिडेट for each position. I mean, I need to create a roll-up summary between the position and the candidate. So first of all, I need to check with the relationship. मुझे relationship check करना पड़ेगा between position and the candidate. अगर position और candidate के बीच में master detail relationship है, then only I can create the roll-up summary. और अगर नहीं है, तो फिर मुझे अगर lookup relationship है, so at the first I need to create a lookup. I need to convert the lookup from. I need to convert the this रिलेशनशिप फ्रॉम लुकअप टू द मास्टर डिटेल. ठीक है, तो चलिए पहले मैं चेक करता हूँ, है ना. पोजीशन और द कैंडिडेट को मैं स्कीमा पे लेके आता हूँ. सो लेट्स गो टू द स्कीमा बिल्डर. नाउ लेट्स ब्रिंग दिस पोजीशन एंड द कैंडिडेट. जस्ट क्लियर ऑल ऑफ देम. नाउ position object and the candidate object, okay, they are related in the master detail relationship. See, yes, there's a master detail relationship तो है यहाँ पे, तो I can now create the roll up summary. That's good. Okay, so हमें क्या करना है? We need to create roll up summary. पोजीशन ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना है. ऑफ कोर्स पेरेंट पे ही क्रिएट कर सकते हैं. तो लेट मी वंस अगेन वेरीफाई. पोजीशन इज योर पेरेंट एंड कैंडिडेट इज योर चाइल्ड. तो हम पोजीशन ऑब्जेक्ट पे यानी कि पेरेंट ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी क्रिएट करेंगे टू रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच पोजीशन. ओके, गॉट इट. तो कैसा है देखिए, लेट्स कम टू दिस. इफ आई गो टू द पोजीशन, now I have so many positions over here, sales representative, Oracle, इस तरह से. What the client is want कि out of this all, he's asking कि देखो अभी इस पे किसने कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो वो मुझे पता चलना चाहिए. अब उसके लिए इनिशियली अभी हम क्या कर रहे हैं? वी नीड टू गो टू द कैंडिडेट ऑब्जेक्ट. कैंडिडेट्स में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है. लेट मी फर्स्ट क्रिएट फ्यू मोर रिकॉर्ड्स ओवर हियर. Because inside the candidate right now we are having only few records. तो मुझे पहले कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करने दो.
and this candidate is applying for the sales representative. His contact number this, the email ID is what, sneha@c.com. Let me give a PAN number. Give a passport number and the expected CTC. Try to save this. Let me clone this. Sneha Tripathi, Prat Kumar, Java. Let me try to save this. So passport number को भी मैंने unique कर दिया है. So I'll save this. Let me first create few records, तभी conceptual हमको ज़्यादा समझ में आएगा. She's applying for sales manager position and that. Now let me see. Let's bring up few more columns over here. Like what is the position they have applied? ठीक है. So I have few candidate record with me. I have few candidate record with me, and you see that Snehal has applied for the sales manager. Neha has also applied for the sales manager. Bharti and Sneha Tripathi, they have applied for this position. So we come to know that this candidate has applied for this position. Now inside the position object, if I go to the position object, what the client want is that कि यहाँ पर उसको एक column दिखना चाहिए कि like the sales for the sales manager, how many candidates have applied. So if I go to this, if I go to the candidates, if I go to the candidates, I need to see अच्छा sales manager किस लिए apply किया है, sales manager के लिए इसने भी apply किया है, okay, and could be like this कि sales manager के लिए किसी और ने भी apply किया, तो let me clone and view, sales manager के लिए हो सकता है कि ठीक है, sales manager के लिए इन्होंने भी apply कर रखा है, but then he could join in immediately. Let me save this, ठीक है. Okay, so let's go to the position object, candidate object. So I can see that sales manager के लिए भाई एक candidate है, दो candidate है, sales के लिए तीन candidate है, ठीक है, sales manager के लिए चार candidate है. तो ये मुझे यहाँ पर आके ढूंढना पड़ रहा है. But then what I want to have some sort of automation over here. If I go to the position object में यहाँ पे जैसे इतने सारे columns है, I must have one column over here. एक column और चाहिए मुझे कि for this position how many candidate has applied.
For sales representative, the number of candidate, Oracle number of candidate, Oracle admin number of candidate, sales manager number of candidate. So what the client want is client want to have one additional column over here कि जिसको देखने से उसे पता चल जाए कि how many candidates has applied for every position. ठीक है. So how we are going to do that? How we are going to do that? We are going to achieve this functionality with the help of roll-up summary. With the help of roll-up summary, we are going to achieve this functionality. ठीक है, चलिए. So between the position and the candidate, there is what? There is a master detail relationship. So let's go to the position object because roll-up summary is always created in the parent. So parent is position. Let's go to the position object. Expand करिए force.com quick access menu को and go to the new fields. Inside the view fields, you have one option called as new fields. So new fields में आप create करिए. What you want to create a roll-up summary. And so let's me create a roll-up summary. ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका रिलेशनशिप मास्टर डिटेल है. अगर आपका रिलेशनशिप मास्टर डिटेल नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस ऑप्शन. ठीक है. जब भी आप लुकअप रिलेशनशिप देखते हैं, लुकअप रिलेशनशिप अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है और आप पेरेंट में जाके देखेंगे तो आपको रोल अप समरी ऑप्शन डिसेबल है. नेक्स्ट, गिव द नेम. लेट मी गिव अ नेम लाइक कैंडिडेट काउंट. कैंडिडेट काउंट. ठीक है. You want to give any description, go and give any description. I'm just skipping this. Go to the next. Summarize object. See, वैसे तो मैंने सारी चीजें लिख दी है. Who's the parent object? Who's the master object? Position. Who's the summarized यानी child? Child कौन है? Candidate. What type of roll up? What type of formula you are applying? We are applying the count formula. Now out of this four function, out of this four function, we are making the use of count function. ठीक है. चलिए. So summarize object is your candidate object. Candidate object से values लेनी है. ठीक है. Now roll up type मतलब कौन सा formula apply करना है? I just want to have a count. Okay, for this every position, for the sales representative, how many are the candidates? For this Oracle admin, how many are the candidates? For sales manager position, how many are the candidates? So I just want to have a count. कि मेरे पास में count होने चाहिए. And that is why out of all these four functions, I am selecting the value of the count. ठीक है. I'm selecting the values of the count. तो अभी कौन से काउंट चाहिए? तो अभी ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, ओनली द रिकॉर्ड्स मीटिंग द सर्टेन क्राइटेरिया. तो अभी फिलहाल ये तो नहीं है. आई जस्ट वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ द काउंट. आई एम गोइंग विद द डिफॉल्ट सिलेक्शन. लेट मी जस्ट प्रेस द नेक्स्ट बटन and then make it visible for every profile user and go and click this next button and save it. Okay, so we created one roll up summary. So ये जो clock का symbol है, clock का symbol actually this indicates that this field is currently being calculated. So in the back end, Salesforce is actually putting some calculation. So you just need to wait it. आप थोड़ा सा wait करिए. कब तक wait करना है? बस refresh करो window को and see whether this icon has gone or not. So now see this, I refreshes this window, so icon हट गया. Now this means that my roll-up summary has now been activated. So now if I go to the position object, if I go to the position object, if I open each position, let me close first of all, let me close every window from here. Now if I open every position, if I open the sales representative, let me see. There's a new field over here, candidate count नाम की एक नया field है. And I got this here for the sales representative, दो candidate ने apply कर रखा है. Now see, this is a read only field. If you bring your cursor over, if you bring your mouse, ये तो editable है. But this is what? It's a logged. Logged मतलब it's a read only field. You cannot change this. Double click, nothing happen. ठीक है. तो ये हम change नहीं कर सकते. That is why I told this कि read roll up summary is a read only field. Roll up summary is what? It's a read only field. You cannot change the value. Why? Because it's being calculated with using a function. ये function से calculate होके value आपको return होता है. So for sales representative, we have two candidates. Let me see one by one. For the senior Oracle database admin, whatever this position, there's only one candidate. Now Oracle admin, if I open this position, I can see there is two candidates. And if I open this senior manager, I can see, there are four candidates. See, every time when I want to see how many candidates are there, I need to open the account. I need to open this particular position record and then I could get it. So let's bring a more column over here. Let's bring one more column. यहीं पर editing कर लेते हैं so that हमको यहीं पर उसकी values मिल जाए. Let me do one thing. Let me remove this passport required, travel required from here. Let me remove this. And we created one more column called as candidate count. Let's have this value.
इसको थोड़ा सा ऊपर ला लेता हूं मैं कि जस्ट adjacent to the position name, we should have the candidate count also. Let me save it. Now see, for the sales manager, I could see that altogether there are 4 candidates that have applied. तो Oracle admin के लिए 2 candidates, इसके लिए ये इतना, ये 3 पोजीशन के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया. We don't have any candidate count, so it is 0. तो ये है बेसिकली रोल अप समरी. नाउ फ्रॉम वेयर दिस वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम, ये जो 4 आया, ये 2 आया, ये कहां से आया? दिस इज कमिंग फ्रॉम द कैंडिडेट. इफ आई गो एंड सी कि सेल्स मैनेजर के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, सो लेट्स गो टू द कैंडिडेट एंड सी कि सेल्स मैनेजर के लिए भाई 1 2 3 and 4. यू नो इफ आई कम टू हियर एंड आई सी ओरेकल एडमिन के लिए कितनों ने अप्लाई किया है, तो लेट्स गो टू हियर. ओरेकल एडमिन के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया. सो दिस इज द थिंग, रोल अप समरी क्या है? तो रोल अप समरी एक रीड ओनली फील्ड है. कहां पे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट पे. ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू गिव द वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है. आपने काउंट फंक्शन यूज किया तो इट्स गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द काउंट. आपने मिनिमम मैक्सिमम, जैसे कि मान के चलो कि एक यूज केस, जैसे कि अंडरस्टैंड करो आप, एक यूज केस दे रहा हूं मैं आपको कि out of the annual revenue generated from the 10 clients, out of the annual revenue generated from the 10 customer, what is the minimum and the maximum annual revenue generated and what is the name of that customer? You need to get it. तो आप कैसे करोगे? तो आप रोल अप समरी से करोगे. ठीक है. इफ आई आस्क यू कि जनवरी से लेके अब तक हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हाउ यू नीड टू कैलकुलेट, तो आप सम फंक्शन यूज करोगे. एनुअल रेवेन्यू फील्ड पे पर सम फंक्शन लगाओगे and then it's going to get the value of entire calculation, वो ना पूरा ऐड करेगा और at the end it's going to return you the value. So ये डिपेंड करता है कि what is the kind of use case, what's the kind of requirement is there. अभी मेरा रिक्वायरमेंट कैसा था? I just need to calculate कि भैया हर पोजीशन के लिए how many candidates has applied and that is why I selected this function called as count. अभी यूज केस टू यूज केस डिपेंड करता है कि आप काउंट लेंगे कि मिन लेंगे कि मैक्स लेंगे कि सम लेंगे. ठीक है. सो इट ऑल डिफर्स बिटवीन द यूज केसेस टू द यूज केसेस. ऐसा ही. चलिए अब एक और यूज केस यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि अभी देखो, ऑल्दो आई कैन सी दैट फॉर द सेल्स मैनेजर भैया 4 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है. 4 लोगों ने अप्लाई किया. कौन कौन से 4 लोग हैं? कुमार रंगा इज देयर, Neha Sharma is there, Snehal is there, and Abhinav Sharma. These are the 4 candidates that has applied for this position. Now Kumar can join it immediately. Kumar is an immediate joiner. That's great. And Neha can join within the 7 days. Okay, got it. Snehal can also join in the 7 days. And Abhinav can join immediately. Okay, Abhinav can join immediately. See here. So now the client wants what? कि client बोलता है कि ठीक है मुझे ये तो दिख गया कि for this position sales manager the 4 candidate has applied. Now I just want to see how many of this 4 candidate can join immediately. Because जो immediate join कर सकता है ना, मैं पहले उसको contact करूंगा. My first preference goes to the immediate joiner. उसके बाद में फिर 7 days, फिर वो 15 days, फिर 1 month, जैसा भी. तो कैंडिडेट वो का अपना क्लाइंट बोलता है कि यहाँ पर एक और कॉलम दिखा सकते हो क्या तुम ऐसा कि जिसमें जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि 4 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो अब ये 4 में से कितने हैं जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो अगेन वी आर गोइंग टू डू विद द रोल अप समरी. तो रोल अप समरी से हम ये करने वाले हैं. सो लेट्स सॉल्व द यूज केस की कॉन्फ़िगर रोल अप समरी फॉर द पोजीशन ऑब्जेक्ट टू काउंट द नंबर ऑफ इमीडिएट ज्वाइनर्स. फिर से काउंट ही करना है. किसको काउंट करना है? फॉर एवरी पोजीशन हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन इट इमीडिएट, उसको हमें काउंट करने का है. सो लेट्स वंस अगेन गो टू दिस. लेट्स क्रिएट अनदर रोल अप समरी. So roll up summary is always created on the parent object. So go to the position object, expand the force.com quick access menu, view fields में जाके new पे क्लिक करेंगे. ठीक है. क्या क्रिएट करना चाहते हैं? रोल अप समरी क्रिएट करना चाहते हैं. सो रोल अप समरी पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें. हाँ, अब मुझे क्या काउंट करना है? इमीडिएट जॉइनर्स कितने हैं. इमीडिएट जॉइनर्स कितने हैं? तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस इमीडिएट जॉइनर्स. ठीक है. और उसके बाद में हाँ, आफ्टर दिस क्लिक द नेक्स्ट बटन. ठीक है. क्या चाहते हैं आप? हम सम ही चाहते हैं सारे इमीडिएट जॉइनर्स का. विच इज योर समराइज्ड ऑब्जेक्ट. समराइज यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है? कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में से काउंट ही चाहता हूं मैं. लेकिन किसका काउंट? दिस टाइम मुझे एक फॉर्मूला चाहिए अब यहाँ पे.
अब यहाँ पे मैं सेकंड क्राइटेरिया में जा रहा हूँ, ओनली द रिकॉर्ड्स मीटिंग द सर्टेन क्राइटेरिया। इसके पहले मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला चाहिए, एंड सो आई एम टेकिंग दिस एज ओनली द रिकॉर्ड्स who's meeting a certain criteria. कौन सा criteria? Now you need to give the formula. We want that the notice period, भाई position candidate object में notice period should equals to not equals to, जैसा भी ये आप जाना पहचाना इंटरफेस है हमारा। शुड इक्वल्स टू व्हाट? तो यहाँ पर आप देखिए एक लुकअप आइकन क्रिएट हो चुका है, इट शुड बी इमीडिएट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका नोटिस पीरियड इमीडिएट है फॉर एवरी पोजीशन, ऐसे कैंडिडेट जिनका नोटिस पीरियड इमीडिएट है, रोल अप समरी वो काउंट आपको लाके दे देगी, ठीक है। रोल अप समरी जो क्रिएट कर रहे हैं काउंट पे क्रिएट कर रहे हैं, किसका काउंट? पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था, अभी मैंने क्राइटेरिया इंपोज किया, आई imposed and I inserted one formula over here. I just want to have a count of all those candidates, all those candidates whose notice period is what? It is immediate. I mean, they could join it immediately. So let's have this and click the next button. Make it visible for every profile user and then click the next button. Let it be landed on the default layout. That's the position layout and save. ठीक है, तो now we created one more roll-up summary. See, immediate joiner के नाम से एक roll-up summary and it's taking some time to get the calculation in the between. And behind it's making some calculation. Let me just try to refresh and see. Yes, तो एक और roll-up summary create हो गई. So far we created two roll-up summary. पहला candidate count, दूसरा है immediate joiner. Now let's go to the position object. Let me first refresh this over here. ठीक है, let me first refresh. Now if I open any of the position, वैसे मैं ये लेके आ रहा हूँ सामने में, but let me try to show you over here. If I open any position, for example the sales manager position, I open this, 4 candidate has applied, out of them 4, 2 can join it immediately, तो बस यही कॉलम मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. Let me bring that column over here. So expand the force.com quick access menu, go and edit the column, have this column immediate joiner, yes, have this column over here, और फिर इसको ऊपर ला लेते हैं कि just adjacent to the candidate count, this is the immediate joiners count. Now see, for sales manager 4 candidate has applied, 2 of them can join it immediately. Oracle के लिए 2 has applied, so both of them can join immediately, and here also, ठीक है. So this is how the interface looks like now, and this is the functionality what we have achieved using roll-up summary. Got the concept, everyone? If you want, I can repeat it once again, or should I proceed with the new concept? Yes, please tell me. Please tell me, what is a roll-up summary, by the way? Roll-up summary is a read-only field. Roll-up summary क्या है? It's a read-only field. Roll-up summary क्या है? It's a read-only field. It's going to give you the value from the child object. Child के object से value निकाल के देगी. कौन सी value? ये depend करता है हम किस तरह का function use कर रहे हैं. Roll-up summary has default 4 functions. Apart from this, roll-up summary में कोई नया function create नहीं कर सकते आप, ठीक है? So roll-up summary based on this function, based on the count, based on the minimum, based on the maximum, based on the sum, ठीक है? So roll-up summary आपको एक value ढूंढ के देता है, निकाल के देता है, ठीक है? Roll-up summary कब लगता है? When the relationship type is master detail only. एक object में how much roll-up summary you can create? You can at max create 25 roll-up summary, not more than that. Roll-up summary is always created. This field is always created in the parent. It's going to give you the value of the child. You cannot edit it because it's a read-only field. Okay. So here are the few assignments for you. These are the 3. I mean, apart from these two use cases, what I just solved, you need to go and solve these 3 assignments also. To total आपको 5 problems solve करने हैं. You need to create a roll-up summary on the account object to give the number of the opportunities. You need to create the roll-up summary on the account object to get the sum of total revenue generated from each customer. यहाँ पे count function रहेगा, लेकिन यहाँ second cases में sum function रहेगा, and that is something you need to identify. मैं तो बता दिया, लेकिन फिर भी आपको ढूंढना है. Configure a roll-up summary on the position object to get the count of candidate who is having more than the 5 years of experience. ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनको एक्सपीरियंस मोर देन 5 years है, ऐसे कैंडिडेट हमको ढूंढ के निकालने हैं, तो फिर रोल अप समरी लगाना. सो आई एम गिविंग यू दीस 3 असाइनमेंट्स. ये 3 असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूं मैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में. चलिए, आई नाउ आस्क यू वन क्वेश्चन. आई नीड टू डिस्कस यू फ्यू थिंग.
एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है. Think of it and give me the answer. I give you one scenario and you suggest me what is your approach to solve this scenario. You know, आप कौन सा approach अपनाएंगे इस scenario को solve करने के. Let me give you one scenario. If I go to account object, you know, if I go to the account object and if I try any, I open any of the account. For example, I open this Merck Incorporation account. Now I can see that this account Merck Incorporation is having two contacts that are associated to it, Jim DeCosta and Tim Bart Longstocking. So for the account Merck, there are actually two contact records. Okay. If I open this Genie Point, for the Genie Point account, I can see that again there is one contact associated to it. Okay. If I open this United Oil and Gas Corporation, for this account record, I can see that there are almost 4 contact records that are associated to this account. Now I want you to design one functionality that if I open this account, here in this table, I must have, I want you to create this functionality. I want you to create this functionality that, when I come to this, I must have a column over here जहाँ पे लिखा है number of the contacts. For example, for the United Oil and Gas, there are 4 contacts. For Genie Points, there are 1 contact. For Merck Incorporation, there are 2 contacts. I want you to create a functionality that on the home page itself, I could get this number of the contact और यहाँ पे ये सब display हो. जैसे for this United Oil and Gas, it should indicate me that there are 4 contacts associated to this. There for the Genie Point, there are 1 contact, and for the Merck Incorporation, there are 2 contacts associated to this account record. I want you to develop this functionality. Now you tell me how you are going to solve this. Yeah. Give me your approaches. This one is an interview question. Give me your approaches. Yes. Sir, first of all, we will check if there is master detail relationship between account and contact. Yes, Rahul, can you please repeat it? Sorry, I actually didn't. Okay. Sir, first of all, we will check if there is a master detail relationship between account and contact. Then what? If there is master detail relationship, then we can create a roll-up summary. Now, can you tell me what is the relationship between account and contact? Yeah, tell me. Sir, can I answer? Between account and contact, what is the relationship? Sir, lookup relationship. Lookup relationship. There's no need to check. It's a default relationship. Default relationship, right? Yes. Who's that? Amira. So by default, we have the lookup relationship between account and contact. So firstly, we have to, can we convert the lookup relationship of the standard objects into master? That is what my question. Why you are asking me the same question? So actually, I'm going to give the answer, but the question arises itself. You cannot convert it. You cannot convert this relationship. It's a standard relationship. You cannot convert this between account and contact. It's a default relationship, but you cannot convert it. The answer is you cannot convert it. ठीक है? चलो आगे बताओ अभी. Yes, Amira. So if we can't convert the lookup into master, then how can we set the roll-up summary for this? सवाल का जवाब सवाल थोड़ी ना होता है. I'm thinking. So wait, I'm just thinking. Yes, Firoz. What will be your approach to solve this? अच्छा चलो मैं आपको यस फिरोज क्या बोला आपने? सर सोच रहा हूँ मैं. अच्छा ठीक है.
ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, सवालों में हम जवाब को ढूंढने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट? यस, आंसर इट। व्हाट इज द Lookup. रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट? लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। Second question, can we create a roll-up summary over here? Can we create this? If you are thinking that we can achieve this with the help of roll-up summary, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप roll-up summary क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे? No sir. See, No, between sir. there is only one, मैंने No, देखो sir. बहुत स्ट्रेस डाल के ये बात बताई थी कि there is only one relationship, one lookup relationship, एक ही lookup relationship है between account and opportunity, जहाँ पर आप roll-up summary कर सकते हो। लेकिन बात account and opportunity की नहीं चल रही है, बात चल रही है account and contact। तो यहाँ लुकअप रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ लुकअप रिलेशनशिप एंड यू कैन नॉट क्रिएट अ रोल अप समरी, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कुल मिला के बात ये बनती है कि पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप है, आप इसको मास्टर डिटेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये डिफॉल्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये मास्टर डिटेल में नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पे रोल अप समरी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस फंक्शनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नजर आना चाहिए कि कितने कितने ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो इस अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे 4 दिखना चाहिए और यहाँ पे जीनी पॉइंट पे मेरे को शायद 1 है, मार्क मार्क पे 2 है और इसके शायद जितने भी है। So I cannot achieve this functionality with the roll-up summary. First of all, the first answer is we cannot achieve this functionality with the roll-up summary. They will ask you this question. They will ask you this question. ये सिनेरियो आपके सामने पुट करेंगे बिटवीन अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बेसिस में या बिटवीन अकाउंट और केसेस के बीच। दे विल, आई डोंट थिंक दे विल पुट यू बिटवीन द अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी के बीच में रोल अप समरी लग सकती है, लेकिन अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच रोल अप समरी नहीं लगाई जा सकती, अकाउंट और केसेस के बीच में रोल अप समरी नहीं लगाई जा सकती। सो दे विल ट्राई टू पुट यू दिस सिनेरियो बेस्ड ऑन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ईदर और बेस्ड ऑन अकाउंट एंड केसेस, क्योंकि ये वो दो हैं जहां पे रोल अप समरी नहीं लग सकती और आप रिलेशनशिप टाइप को कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट कन्वर्ट द रिलेशनशिप टाइप ओवर हियर, यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस। तो अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? देयर इज ओनली वन वे। सी, जब भी कोई मेरा, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, मेरा योर there's lots of disturbance with your mic. Answer please. Sorry, Umera, can you please type it in? Sir, in the field type of Shweta, creating one-to-one will not signify your. See, again, for the one-to-one relationship, there are few different parameters, you know. So that's really not going to help you in that case. So, can I answer for this? You know, can now finally I answer for this? There's only one. Sure, sir. There Yes, is sir. only one way. Guys, whenever a functionality is not being achieved by the admin, you know, by the configuration, if you don't achieve any functionality, you know, there's only one option. There is only one option to go with the customization. There's only one option to go with the programming. And inside the programming, we have something called as triggers, Apex triggers. Triggers is the most powerful tool. Trigger is the most powerful tool in the hands of a developer. So whenever, see, अभी इसके ध्यान से सुन लो, whenever you got any type of this question, जहाँ पे कि फंक्शनैलिटी अचीव करने का कोई भी जरिया नहीं हो, blindly say, you know, blindly say that there's only one option to go with the Apex trigger. Let me show you something. उमेरा ने क्या आंसर दिया है? In the contact object, while creating a new field, by default, there is an option of the roll-up summary without master detail. In the contact object, while creating a new field, by default, there is an option. कहाँ देखा आपको? If you create a new field. Sir, वो अभी नहीं, पहले के मतलब पहले ठीक है, solve ठीक है, करते ठीक है। वक्त रोल अप इसका समरी, आई दिखाते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी का ऑप्शन तो है, बट रोल अप समरी कहाँ क्रिएट करते हैं? हमेशा पैरेंट पे। यहाँ कॉन्टैक्ट पैरेंट है और इसका एसोसिएशन जिसके साथ में है वो आपका चाइल्ड बनेगा, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी योर समराइज्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ वो बात नहीं चल रही है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट की बात चल रही है। अकाउंट पैरेंट है, कॉन्टैक्ट
तो आप अकाउंट पे रोल अप समरी कर सकते हो क्या, वो देखो। कॉन्टैक्ट में मत देखो, आप अकाउंट पे जाके देखो कैन यू क्रिएट अ रोल अप समरी इन द अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकाउंट पे रोल अप समरी क्रिएट करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, है यहाँ पे कॉन्टैक्ट है क्या, बताइए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम है क्या। आई कैन गेट द काउंट फ्रॉम No. अपॉर्चुनिटी, एंटाइटलमेंट एंड एसोसिएट। ये है वो तीन ऑब्जेक्ट जहाँ पे जिसका आप रोल अप समरी क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट कॉन्टैक्ट के ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो चलो मेरे को आंसर कंप्लीट करने दो। हाँ, तो मैं ये बताने वाला था आप लोगों को कि whenever the functionality is not being achieved, whenever a functionality is not being achieved with your admin part, ठीक है, तो you need to go with something called as apex trigger. You need to go with the apex trigger. ठीक है, हर बार इसका एक ही आंसर रहेगा, नो एवरी टाइम देयर विल बी ओनली वन आंसर इज द अपेक्स ट्रिगर। हर बार देयर विल बी ओनली वन आंसर। सी, ये है, दिस इज द सेल्सफोर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। व्हेनेवर व्हेन यू नो व्हेनेवर कोई भी रिकॉर्ड अपडेट होता है, कोई भी रिकॉर्ड लोड होता है, सबसे पहले जो ट्रिगर, सबसे पहले जो चीज एग्जीक्यूट होती है वो है ट्रिगर, बिफोर ट्रिगर। अब ट्रिगर्स में काफी सारे टाइप रहते हैं, बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर, डिलीट ट्रिगर्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहली जो चीज एग्जीक्यूट होती है ना वो होता है ट्रिगर। अब ये थोड़ा सा फेड आउट हो गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। सबसे पहली चीज जो एग्जीक्यूट होती है वो होती है ट्रिगर। ट्रिगर सबसे पावरफुल होता है। उसके बाद में आपके कोई भी चीज, आपके सिस्टम वैलिडेशन, आपके कस्टम वैलिडेशन, जो कुछ भी आपके, ठीक है, असाइनमेंट रूल्स, वर्क फ्लो, सब कुछ बात है, प्रोसेस बिल्डर, एक्सक्लेशन, सब कुछ बात है। लेकिन सबसे पहले जो चीज एग्जीक्यूट होती है वो होती है ट्रिगर्स। सो देयर इज ओनली वन आंसर दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर वी कैन अचीव दिस। तो आपको जो आंसर देखना है, आपको आंसर देने की शुरुआत ही इस चीज से करना है कि बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट वी कैन नॉट क्रिएट रोल अप समरी, यहाँ से। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो आंसर मिलेगा उनको वो मिलेगा कि वी आर गोइंग टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ रोल अप समरी। ज्यादातर यही आंसर देंगे, क्योंकि जिस तरह की फंक्शनैलिटी मैंने एक्सप्लेन करके बताई, अगर आपने थोड़ा सा सोचा नहीं होता तो शायद आप भी यही आंसर दे रहे होते। लेकिन क्योंकि आपने सोचा इस बारे में, इसलिए आपने नहीं दिया। लेकिन अगर मैं इस तरह की फंक्शनैलिटी आगे मैं किसी को प्रपोज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि फॉर एवरी अकाउंट आई शुड गेट द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट, मुझे पता चलना चाहिए कि नेम नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसे यूनाइटेड के साथ में, इसके साथ में 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा। तो इसका इमीडिएट आंसर सबसे पहले मिलता है रोल अप समरी, विदाउट एनी थिंकिंग। विदाउट एनी थिंकिंग आप सीधा स्ट्रेट आंसर देते हो रोल अप समरी। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंट के साथ में रोल अप समरी कैसे बनाओगे इसका, जब लुकअप रिलेशनशिप, और अभी तो मैंने आपको क्लियर कट दिखा दिया। अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, अकाउंट और एक दो ऑब्जेक्ट जहाँ बन सकता है, लेकिन रोल अप समरी इज नॉट द आंसर। फंक्शनैलिटी लुक्स लाइक टू बी द रोल अप समरी, it cannot be created with the roll-up summary. Why? Because roll-up summary cannot be created between account and contact. पहला तो आपको आंसर ही यहाँ से देना है। जब आप आपका आंसर ही यहाँ से दोगे ना कि we cannot achieve this with the help of roll-up summary, तभी आप पास हो जाओगे। और आपने बोल दिया कि रोल अप समरी, तो गई भैंस पानी। अब चाहे कुछ भी बोलो, जस्टिफाई कर लो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रोल अप समरी से नहीं है ये। आंसर की शुरुआत ही इससे करनी है कि वी कैन नॉट अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ रोल अप समरी, because now get the reasons why we cannot achieve it, because between account and contact there is lookup relationship. Moreover, we cannot convert this lookup to the master detail, we cannot convert it from lookup to the master. And roll up summary is something which is only applied on the master detail relationship. ये लिख लो सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, please write down everything. So how we are going to achieve this, there is only one way, there's only one way that you are going to achieve this, is the apex triggers. There's only one way, writing the apex trigger is the only solution. Now Shweta, what you are saying means that roll up summary can't apply on any standard object. Why cannot? Between account and opportunity you can apply roll up summary. अभी मैंने आपको दिखाया, these two are the standard objects. Why you are getting confused? Roll up summary can be applied on the standard object, yes. If there are standard object जिसमें master detail relationship है, वहां भी apply कर सकते हो. And between account and opportunity you can apply the roll up summary. ऐसा कुछ नहीं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो ये ऑप्शन ही नहीं नजर आता था मुझे। if I go to the account, if I try to create a new field over here, what kind of field? Roll up summary field. I have this option because I can create it on here. ठीक है, I can create it over here.
हाँ, अब इसमें मैं किसके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ? आई कैन एसोसिएट दिस ऑन द अपॉर्चुनिटी, एंटाइटलमेंट्स एंड द एसोसिएट लोकेशन। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। If I go to the contact, even I can create a roll-up summary here also. Let me see on what object I can create it. If I create it roll-up summary, next roll-up summary can be created with the help of entitlement contacts. Like see, ऐसा कुछ नहीं कि रोल अप समरी नहीं कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड हो या कस्टम ऑब्जेक्ट हो, नहीं, रिलेशनशिप इज द कंसेप्ट। हाँ, अगर लुकअप रिलेशनशिप है तो बस अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी ही लुकअप है जिसमें आप रोल अप समरी कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइए प्लीज, ठीक है। चलो, सॉल्व ऑल दिस असाइनमेंट टुडे। आई एम गोइंग टू एंड अप हियर। एक लेक्चर और लेता हूँ मैं, अलग से एक्सप्लेन करता हूँ 1-to-1 रिलेशनशिप। अभी काफी टाइम हो गया, अभी आते आज काफी टायर्ड हो गया, सो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेते हैं, उसके साथ ही फिर मैं ईमेल टेम्पलेट भी स्टार्ट कर दूंगा उसी दिन, ठीक है। तो उसको फ्रेश माइंड से लेता हूँ मैं, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 एसोसिएशन कैसे क्रिएट करना। आज हम यहीं पे एंड करते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करिए सभी लोग। ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो, ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करें, प्लस ये 2-3 असाइनमेंट जो दे सारी सॉल्व करें। लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।